Good morning everyone. Welcome to the lecture of design of structure. In the design of structure, right now we are studying a T-beam and we have already calculated some example based on analysis of the beam. Now we are going to start a design example of T-beam, right? So before going to start the example, I will let you know steps for the T-beam. So here design steps for the T-beam are as a numbers. So first of all we have to find out the lever arm Z. So for finding the lever arm Z, we have one equation, small d minus df by 2. Here small d is the effective depth of the beam. df is a depth of a flange, right? So from this equation we will get a Z. Then we have to calculate the area of the steel in this beam. So for finding out the area of the steel, we have one equation for mu. So mu is given in the design example, right? So from this equation of mu we will get the area of the steel. So equation for the mu is 0.87 Fy into AST into Z. So we will put the all value of mu, Fy, AST and Fy and Z in this equation, and we will get the area of the steel from this equation. After finding out the area of the steel, we will provide the area of the steel, and now we will analyze that beam after providing the area of the steel in that beam section. So again, for analysis of the beam, we know what is the procedure. So first of all we have to calculate FC and FT. So from FC for FC we have one equation 0.36 FCK into BF into DF, where FCK is a characteristic strength of the concrete, BF is a width of the flange and DF is a depth of the flange. FT is 0.87 Fy into AST provided we will put in this equation. So we all know what is FT and FT, as we have already calculated some examples based on analysis of the beam. So FC and FT find out करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर FC is greater than FT है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगी वो देखेंगे. FC is less than FT है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगी. सो FC और FT के ऊपर से हम लोग न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, XU फाइंड आउट करेंगे. XU फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी हैव वन इक्वेशन C1 plus C2 is equal to T. So from this equation we can calculate XU, right? So XU फाइंड आउट करने के बाद हम लोग XU max फाइंड आउट करेंगे. XU max हमें पेज नंबर 70 IS 456 2000 में से मिलेगा. सो XU एंड XU max फाइंड आउट करने के बाद हम लोग सेक्शन ऑफ द बीम डिसाइड करेंगे कि जो बीम हमारा है उसका सेक्शन कौन सा है, वो अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है कि पैरेलल सेक्शन है. ठीक है, so from the values of XU and XU max we will decide whether the section is under reinforced, balanced or over reinforced. Then we have to calculate mu. So mu हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो mu के लिए गाइडलाइन हमें यहाँ पे दी है IS 456 2000 पेज नंबर 96 एंड 97 क्लोज नंबर G2. ठीक है, सो ये गाइडलाइन के ऊपर से हम लोग mu फाइंड आउट करेंगे. सो mu फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक चार्ट भी दिया है. ठीक है, सो वो चार्ट आपको याद रखना है और वो चार्ट के अकॉर्डिंग टू आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. If calculated mu is greater than mu acting on a beam, the section chosen is okay. So हम लोग जो डिज़ाइन में AST और वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद हमारा mu जो आ रहा है, जो हमें mu मिल रहा है, वो mu हमें जो एग्जाम्पल में गिवन mu है उससे ज़्यादा होना चाहिए. अगर उससे कम आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा हमारा सेक्शन. सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी AST प्रोवाइड कर रहे हैं वो AST के साथ हमारा जो mu है वो बीम के ऊपर जो mu ऑलरेडी एक्टिंग है उससे ज़्यादा होना चाहिए.
ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है एमयू एंड कैसे हम लोग एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट वन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल इज determine the area of a tensile reinforcement for a T-beam to resist the factored moment 300 kN into meter. Use M20 and Fe415 steel. Right, here width of the flange is given 1400 mm, width of the web is given 300 mm, thickness of the flange is given 100 mm, effective depth is given 700 mm. So these dimensions are given. So first of all what we will do, first of all we will draw a T-beam section and we will put all the dimension in this drawing. So this is BF, width of the flange, depth of the flange. This is the small d because यहाँ पे हमें क्या दिया है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है. ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ हमारा 700 है, मतलब कि स्मॉल d हमें दिया है. और ये है विड्थ ऑफ द वेब जो है 300 mm. ठीक है, ये और डायमेंशंस हमें दिए हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीवर आर्म Z फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो हमें पता है लीवर आर्म Z का इक्वेशन क्या है. सो Z इज इक्वल टू D माइनस DF/2. यहाँ पे हमारा D है 700 और DF है 100. सो Z इज इक्वल टू 700 माइनस 100/2. सो हमें Z कितना मिला, 650 mm. ठीक है, अब हमें Z मिल गया है तो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, AST फाइंड आउट करेंगे. सो जैसे मैंने स्टेप 2 बताया था आगे कि AST फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है MU का, जिसमें हमारे पास MU की वैल्यू है, FY की वैल्यू है और Z की वैल्यू है. सो MU का इक्वेशन है 0.87 FY इंटू AST इंटू Z. सो उसमें हम लोग MU की वैल्यू पुट करेंगे 300 इंटू 10⁶. FY की वैल्यू पुट करेंगे 415 और ASC की वैल्यू पुट करेंगे 6. ASC की जगह पे ASC रखेंगे और हम लोग Z की वैल्यू पुट करेंगे 650. ठीक है, अब इसमें हम लोग ASC को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो हमें एरिया ऑफ द स्टील मिल जाएगा. सो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्टील हमें कितना मिल रहा है, 1278.32 mm². ठीक है, अब इसको हमें प्रोवाइड करना है. सो यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं वो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ द बार डिसाइड करेंगे. डायमीटर ऑफ द बार डिसाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस एक डायमीटर ऑफ द बार का एरिया फाइंड आउट करेंगे. मतलब कि यहाँ पे 16 mm डाया बार डिसाइड किया है तो सबसे पहले π/4 इंटू 16 स्क्वायर करके AST फाइंड आउट करेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST. मतलब कि ये जो 1400 यहाँ पे हमें दिया है 1278.32, उसके डिवाइड बाय ये 16 डाया का AST जितना आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ द बार आ रहे हैं. हमें जितने भी नंबर ऑफ द बार आ रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोवाइड करने हैं, कम नहीं. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर्स ऑफ द बार यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो 7 नंबर्स ऑफ द बार का एरिया क्या है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो 7 नंबर ऑफ द बार का एरिया आ रहा है 1407 mm². सो ये है हमारा ASC प्रोवाइडेड जो हमने प्रोवाइड किया है. ठीक है, now we will analyze the beam using this AST provided. so हमें एनालिसिस करना है बीम का, तो हमें पता है कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, FC एंड FT फाइंड आउट करेंगे. सो FC फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है 0.36 FCK BF इंटू DF. ठीक है, यहाँ पे BF है हमारा 1400 और DF है 100. सो हमें FC की वैल्यू मिल गई. अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे FT. सो FT हमारा है 0.87 FY इंटू AST, जिसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे FY की और AST की, तो हमें FT की वैल्यू मिल जाएगी. अब हम लोग देखेंगे कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है, वेब में है कि दोनों के जंक्शन पे है. ठीक है, सो FC यहाँ पे ग्रेटर देन FT है. तो FC जब भी ग्रेटर देन FT होता है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होती है, फ्लेंज में होती है. ठीक है, सो फ्लेंज में है हमारी न्यूट्रल एक्सिस, तो हमें एनालिसिस कैसे करना है, एस पर सिंगल RC बीम.
तो सिंगल आरसी बीम में हम लोग एनालिसिस करते थे तो कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करते थे? सो IS 456-2000 में पेज नंबर 96 में क्लोज नंबर G 2.1 में जो गाइडलाइंस दी है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए XU फाइंड आउट करेंगे। सो XU हमारा जो है उसका इक्वेशन है 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK इंटू BF। ठीक है, ये इक्वेशन पे से हम लोग क्या करेंगे, XU फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि XU लेस देन DF है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे XU लेस देन DF आ रहा है, मतलब कि ये ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, XU max फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर फाइंडिंग द XU max वी हैव वन इक्वेशन 0.48D विच इज गिवन ऑन अ पेज नंबर 70 IS 456-2000, राइट। So for finding the XU max, we will put a value of small d in this equation. So we will get a XU max 336 mm. Our XU was 50.40 mm and XU max is 336 mm. So our section is a under reinforced section because XU is less than XU max. If XU is greater than XU max, then we will use over reinforced section. Now we have to find out the MU. So for finding the MU in under reinforced section, we have to use this equation. This equation is given in a IS 456 page number 96 G 2.1. So equation is MU 0.87 FY AST into D 1 minus FY into AST upon FCK into BF into D. यहाँ पे हमें B is equal to BF लेना है। ठीक है, सो हमारी विड्थ ऑफ द बी क्या है, 1400 है। ठीक है, BF, सो हम लोग वो पुट करेंगे यहाँ पे और हमें MU कितना मिला, 345.0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हमारा लास्ट क्राइटेरिया क्या था कि हम लोग जो MU फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा AST हम लोगों ने प्रोवाइड किया है उसके ऊपर से वो हमें जो गिवन MU है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे MU इज ग्रेटर देन MU गिवन, राइट। सो हमारी जो डिज़ाइन है वो ओके है, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो सेम हम लोग एक और एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, डिज़ाइन द रेनफोर्समेंट फॉर अ टी बीम फॉर फॉलोइंग डेटा। इफ बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन अ 6 मीटर स्पान and subjected to UDL of 6 kilonewton per meter of a span. Spacing of the beam is 3.5 meter. Thickness of the slab is 130 mm. Width of the web is 250 mm. Overall depth is 700 mm. Effective cover is 50 mm. So use M25 concrete mix and Fe250 as steel. So first of all we will draw a sketch of these given dimensions. So this is the sketch for given dimensions. This is the spacing between a beam. The spacing is a center to center spacing. So spacing is a 3500 mm. Capital D is given 700 mm and if cover is provided 50 mm, so our small d will be a 650 mm. Here DF, depth of the flange is a 130 and width of the web is a 250 given. So first of all we have to calculate the width of the flange. So for finding the width of the flange we have one equation, L0 by 6 plus BW plus 6DF. This equation is given in IS 456-2000 page number 37. So we will put the value of L0, BW and DF in this equation and we will get a BF 2030 mm. After finding the BF we will calculate the MU. So first of all we have to do a factored UDL. So here UDL is given 60 kilonewton per meter, so we will multiply with the 1.5 and we will get a factored UDL 90 kilonewton per meter, right. So after finding a factored UDL we will calculate a MU. So for calculating a MU in a simply supported beam we have one equation, WL square by 8. Here W is a 90 and L is a 6.
So we will put all value in this equation and we will get mu 405 kilonewton into meter. Now we will get value of mu limb. So we will get value of mu limb from SP16 page number 93 table number 57, but we will not use SP16 in an example in an exam. So we have to calculate mu limb from the equation. So we have equations for mu limb given in a IS code. So I have already discussed about the equations from the mu limb from the code. So use that equation and find out the mu limb. So here mu is less than mu limb. So our beam is a singly reinforced beam. So design as a singly T beam. So now for finding the design of the T beam, first of all we have to calculate a AST. So for finding the AST we have an equation of mu and we will put all value of Fy and Z in this equation and we will get the area of the steel. So here area of the steel is a 3183 mm square. So we will provide this area of the steel. So here we will provide 4 numbers of 32 dia bars. So our provided area of the steel is 3217 mm square. Everyone is knowing how to provide the area of the steel in a T beam, as we have already calculated some examples before in a single ERC beam, in a double ERC beam and in a analysis of a T beam. So you all know how to provide bars in a beam. Now we have to check our design, which area of the steel we have provided that are okay or not. So for checking the beam, first of all we have to calculate FC and FT. So from the equation of the FC 0.36 FCK into BF into DF we will get FC, and from equation of FT 0.87 Fy into AST we will get FT. So we will see where our neutral axis is lying. So here FC is greater than FT, so our neutral axis will be lie in a flange. So if our neutral axis in a lies in a flange, then we have to calculate our mu as per a singly RC beam, as we all know. So first of all we will find the XU. So for finding a XU in a single RC beam we have guidelines given in a IS 456-2000 page number 96 G 2.1. So from that guideline we will use this equation. XU is equal to 0.87 Fy into AST upon 0.36 FCK into BF. So in this equation we will put a value of Fy, value of AST provided, FCK and BF what we have founded in this equation. So from this we will get XU 38.29 mm. Now we will find out the XU max. So for finding the XU max we have a guideline given in a page number 70 IS 456-2000. So from that we will get equation for XU max is a 0.53 D. Here small d is a 650, as overall depth is given in this equation, example 700, and a cover of beam is a 50 mm. So our effective depth will be 650 mm. So we will put a value of effective depth in this equation. So our XU max will be 344.5 mm. Now here XU is less than XU max, right? So whenever XU is less than XU max, our reinforced section is a under reinforced section. So for under reinforced section we will use this equation for mu. Mu is equal to 0.87 Fy into AST into D, 1 minus Fy into AST upon FCK into BF into D. So in this equation we will put a value of Fy 250, value of AST 3217, which is we have already provided. D is a 650, again AST is a 3217, FCK is 20, BF is 2030 and small d is 650.
So after putting all the value, we will calculate mu is 443.71 into 10 raised to 6 Newton into mm. Here we have calculated mu was 1901.25 kilonewton into meter. So we have founded 443 into 71 into 10 raised to 6 Newton into mm. So our provided mu is greater than mu acting on a beam. So our design is okay. Thank you so much everyone. If you all have any question regarding a design of T-beam, then you can ask me in a Google meeting, or you can also call me on my mobile. Thank you so much.